मतलब वो जो पूरा बैंगन का प्रोसेस था, मतलब वो जो बाकी के पार्ट्स थे, दैट वर क्लियरली, वो रूट्स एंड एवरीथिंग, दे वर क्लियरली ट्राइंग टू कम अप एंड दे वर ट्राइंग टू ब्रेक द रॉक अराउंड इट। ओके, उसके बाजू में जो रॉक जैसा स्ट्रक्चर था ना, नॉट नॉर्मल मिट्टी नहीं थी, प्रॉपर टाइल्स लगाए थे हमारे स्कूल ने, तो उसको भी तोड़ फोड़ के वो रॉक्स, वो रूट्स वर ट्राइंग टू कम आउट। ओके, बिकॉज दैट इज व्हाट द, like that is how strong trees also are. So वो clearly बहुत ज्यादा physical disintegration cause करते हैं इन rocks, वो break down करते हैं rocks को। ऊपर से ये जो plant and animal matter होता है that is produced by these plants and animals, तो उसमें ना humic acid या फिर carbonic acid होता है that leads to decay. वो then it adds to the, then now you have physical weathering, chemical weathering, so everything goes on together. क्या कह रहे हैं आप, वो ट्री के ग्रोथ को अफेक्ट नहीं करता क्या? नहीं, ये दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, द ट्री इज सो स्ट्रांग यार, वो हमारे स्कूल से पुराना तो ट्री होगा वो। सो आई जस्ट रिमेम्बर दैट because you know when we used to when we used to sit down somewhere for eating our tiffins, so we used to avoid that particular place. You don't want a tree root right next to your tiffin, right? So, yeah, so we used to avoid that place, so I remember that particular right. No, the tree is pretty strong actually. And that is exactly what I was trying to say. Ki trees, we have a question where a student is asking me, ki, doesn't it affect the growth of the tree? You know, the rocks, the surrounding rocks. What I'm trying to say is that usually plant life is so strong. Some plants are so strong that the roots are going to break through the rock. They will physically break through the rock and go ahead with their own growth. That is what the tree does. Life finds a way, you know, that sort of a thing. Anyways, human activities. So you have plowing, mining, construction activities, है ना? ये देखिए, यहाँ पे हम tunnel वनल बनवा रहे हैं and all that sort of thing. What you're actually doing is, there was one stable rock over here. अभी उस rock को human beings are clearly for very you know clear purposes, you need a tunnel to be laid across a place. We clearly understand that thing. Lekin what is happening in the processes, I'll explain the geographical process to you. This piece of rock, or rather a huge mass of rock, was pretty untouched before we decided to lay a tunnel through this part. Okay, now what has happened is, and untouched था मतलब ज्यादा कुछ weathering नहीं हो रहा था उसका, because उसका ज्यादा surface expose नहीं हो गया था weathering को. Now that we have bored, you know, human beings have put a proper hole through this. Okay, एक अच्छा खासा tunnel बना दिया है, and ये आजू बाजू के rock के stability को affect कर दिया है. So now this is just going to lead to accelerated weathering. The whole process of weathering just got accelerated a few times faster for this particular rock. Okay, this huge mass of rock. So that is what happens in biological weathering. ठीक है, ये छोटा सा notes है यार, a few notes जो आपको याद रखने पड़ेंगे when it comes to rate of weathering. Okay. If it is chemical weathering, it is most effective in hot and wet climates, है ना? That is very specific to chemical weathering. Chemical weathering, क्योंकि chemical weathering में क्या क्या elements required होते हैं? Oxygen लगता है, पानी लगता है, carbon dioxide लगता है, ये बहुत commonly required elements होते हैं. You will get that in water, right? And heat जो होता है ना, that always accelerates a chemical reaction. So chemical weathering is most effective in hot and wet climates. ठीक है? Physical weathering के लिए हमको क्या चाहिए था? जितनी भी हमने फिजिकल वेदरिंग के प्रोसेस सीखे अब तक, what was the most striking part of it? That ever weather changes, है ना? Temperature changes, thermal changes available थे, right? Whether it was happening because of water, or because it was happening because of salt, or because, you know, of the rock type, that there were joints in the rock and hence that was widening and so on and so forth. What was the main physical characteristic of all those regions? That ever had diurnal temperature range. It had a great diurnal temperature range, and it was they were semi-arid climates में हो रहा था, है ना? It was happening in semi-arid climates. तो dry temperate climates में best काम करता है, या फिर tropical semi-arid climates में best काम करता है. Okay, physical weathering, because वहाँ पर आपको वो temperature range मिल जाता है. Okay, you will get both extremes of temperature, hot and cold. दोनों extremes मिलने चाहिए. सिर्फ hot temperature या सिर्फ cold temperature won't work, because then वो alternate expansion and contraction hoga nahi rock ka. The rock will either expand or it will contract, and that doesn't help setting stresses. Okay, so you require both processes to happen within a small space of time. Most weathering जो होगा
वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में होता है बिकॉज दैट प्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हाई हीट एज वेल एज हाई रेनफॉल. ओके, तो जहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन अवेलेबल होगा, you can expect greater, a larger amount of weathering, more weathering, okay, greater amount of weathering. And least weathering will happen when the ground is covered by permanent ice sheets, because permanent ice sheets जब आ जाती है तो उसके नीचे का थोड़ा सा हीट कंजर्व हो जाता है, बट बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंजेस नहीं मिलते हैं. ओके, सो उसकी वजह से, एंड पानी तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, मॉइस्चर इज गॉन. इफ दिस इज परमानेंट आइस शीट्स देन दिस इज एब्सोल्युटली ड्राई, बहुत एरिड है ये जगह, मॉइस्चर वगैरह कुछ अवेलेबल नहीं होता है कोल्ड टेम्परेचर्स में. ओके, सो क्लियरली देयर इज लैक ऑफ वाटर and very minimal amount of heat to cause any sort of weathering. Okay, so least weathering, least mechanical or chemical weathering will happen when places are covered by permanent ice sheets. ठीक है people, सारे logical conclusions draw किए हमने. Okay, it also depends on the structure of the rocks. Okay, let's consider limestone. Alright, लाइमस्टोन को मैंने आपको फर्स्ट टाइम जब एग्जांपल दिया था रॉक एंड क्लाइमेट के कॉम्बिनेशन का, आई टोल्ड यू, रिमेंबर दैट weathering जो होता है, if you consider any sort of rock and any sort of weathering, you have to remember that it depends a lot on the rock and climate type. Okay, वो जो combination है उसके ऊपर depend करेगा. So a rock can be very resistant in a certain type of climate and it can be very vulnerable to weathering in another type of climate. Okay, take for example limestone. Limestone जो है it gets rapidly weathered in wet and humid climates. Why? Because पानी जो होता है वो that goes ahead and dissolves all sorts of carbonates and bicarbonates inside limestone, and it just renders it absolutely vulnerable to all sort of weathering. Okay, but यही limestone जब पानी involved नहीं होता है, like I told you, in dry temperate regions like England, it is very resistant to dry climates. वो proper resistant rock करके काम करता है, and you can then see the beauty of limestone या chalk का जो beauty होता है ना, वो ऐसे climates में बहुत खूबसूरती से दिखाई देता है. So this is limestone for you, very vulnerable to chemical weathering in wet and humid climates, but very resistant to dry climates. तो limestone physical weathering को बहुत ज़्यादा vulnerable नहीं होता है, limestone को chemical weathering से problem है. Okay, also remember this. Consider sandstone. Sandstone को consider करते हैं. It's very vulnerable to dry climates, granular weathering वगैरह हो जाएगा, मुश्किल हालत हो जाती है sandstone की. Okay, but यही अगर उसको wet climates में लेके जाओ तो chemical weathering को this rock is going to say, okay, I can deal with this. It can deal with chemical weathering. Okay, it won't respond as badly to chemical weathering. Is that okay? समझा आपको? तो this will depend on कौन सा rock है and किस climate type में it has been subject to weathering. Is this okay? Cool? Okay, ठीक है. Also, let's try to understand what is the एक last topic है, उसको finish कर लेते हैं, then we'll move on to polity. Okay, people, it will take me 2 or 3 minutes to explain this to you. I certainly like this idea of having both lectures placed back to back. Let's understand the significance of what is the importance of weathering. Why is weathering so important? Because what happens is, what is basically weathering? The rock is going to disintegrate or decompose in place. Okay, वही बैठे बैठे sitting in that simple place, वही उसी जगह पे simple process की वजह से over a large period of time, passage of time, the rock is going to break down into smaller fragments. That is what weathering means. Okay, now whatever these smaller fragments are, that leads to the formation of regolith in soils. Okay, ये जो whatever you see ना, ये see this was the original rock. Okay, ये जो पूरा था, that was the original rock. What is वो जो टूटे फूटे rock के fragments होते हैं ना, जो बाजू बाजू में rock के पास रह जाते हैं, that is called as the regolith. Okay, उसको कहते हैं regolith. Regolith मतलब whatever is left behind of that rock, those small fragments, those small little pieces of that rock that are left behind, that is called as regolith. Okay, and of course when this regolith or all these broken down pieces are further broken down, वो और भी ज़्यादा छोटे particles बन जाते हैं, then that goes ahead and contributes to soil. Okay, वही soil बन जाता है. ये जो rock होता है वही disintegrate होके finally उसका soil बन जाता है. Remember, हम जब डिस्कस करते हैं इंडियन सॉइल्स को, तो वी टॉक ऑफ दैट ब्लैक सॉइल विच इज अवेलेबल ऑन द प्लेटो, है ना, डेक्कन प्लेटो पे जो ब्लैक सॉइल मिलता है, वो ब्लैक सॉइल कहाँ से आता है? बेसॉल्ट के वेदरिंग के बाद. हमारा जो डेक्कन प्लेटो है, द डेक्कन प्लेटो इज कंप्लीटली लेड विद बेसॉल्ट. ओके, वो बेसॉल्ट रॉक से बना है.
So this basalt when weathered, जब proper weathering हो जाता है, वैसे भी basalt बहुत ज़्यादा, it is not very resistant or anything. The rock is soft in the first place, okay? So so soft ki, you can simply you can really just take it off with your hand also. इतना soft हो सकता है वो कभी कभी, okay? So or break it down into pieces with your hand. So इतना सॉफ्ट रॉक का जब वेदरिंग हो जाता है, नॉट दैट सॉफ्ट रॉक का वेदरिंग होना चाहिए, बट बेसॉल्ट ये एक स्पेसिफिक इग्नियस टाइप का रॉक है, जब उसका वेदरिंग हो जाता है तो द रिजल्टेंट सॉइल फॉर्म्ड इज ब्लैक सॉइल. Okay, so it has the same mineral composition, pretty similar mineral composition to that of basalt. Okay, and hence black soil is very it is very useful for growing certain kinds of rocks. Okay, I mean certain kinds of crops. Sorry. All right, okay, fine. So once again, this will lead to the formation of soils also. Weathering contributes to soil formation. All right. It also provides some materials for erosion and mass movements. All these materials, in case of erosion or mass movements, this is the material that is going to be eroded or carried away in the mass movement. Okay. All of these movements contribute to the reduction of relief, whether it is weathering or erosion or mass movements. All this contributes to reduction of relief. See people, this is the cycle in the world, that there will be mountain building, bade mountains build honge, and then by the process of erosion or weathering or mass movement, ये जो height होगा, relief होगा ना, वो धीरे 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 कम होता जाएगा. Okay, these mountains will start to become smaller and smaller and smaller, finally becoming flat. And then say denudation. This is the process of denudation, taking off all the relief from the surface of the earth, removing the cover from the surface of the earth. That is denudation. Okay, so all these processes will contribute to the reduction of relief. Okay, and this aids now this process also famously aids in enrichment and concentrations of certain valuable ores like iron, manganese, aluminium, copper, etc. Okay, understand this point. What happens in the rock is have you ever heard people used to sift for gold in soil and river beds में वगैरह ना, ऐसे soil pans में वगैरह जाके they used to sift for gold. याद है क्या ये process? पता है आपको? नहीं पता? Okay, no worries. तो क्या हो जाता है ना, कोई भी mineral के लिए, whether it is gold or silver or iron, manganese, aluminium, copper, ऐसा नहीं है कि ये it is not found anywhere else in the world. ये छोटे छोटे amounts में आपको normally कहीं भी मिल सकता है. Okay, usually in very small quantities it may be found anywhere else. If you seriously wish to mine these particular ores, then that has to be done profitably. Okay, so if you're going to mine a particular ore, then the concentration of that particular ore needs to be higher in that place. Okay, बहुत ज़्यादा concentration होना चाहिए. Then you can say that the whole operation of mining that ore in that place becomes profitable. Okay, वरना क्या आप हर जगह पे छोटा जाके you will go and collect these little amounts of ores everywhere. That doesn't make a profitable operation. That's not how that, and human beings certainly don't work like that. Okay, it doesn't make sense, people. There is no logic to it. All right, so क्या हो जाता है ना, when ये सारा mix and match हो जाता है ना, सारे soil का and सारे ये mass movement का and erosion का process वगैरह हो जाएगा ना, तो उसके बाद वो जो mineral distribution हो जाता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है that some parts of the earth get more amount of mineral ore concentration as opposed to the other parts. तो जिन parts में ज्यादा concentration है mineral ores का, वहां पर आप mining कर सकते हैं. ठीक है, fine. And we already discussed that soils are formed by this. Good. Now can we go on to polity? We finished weathering. We've successfully finished weathering. Abhi kal se na, tomorrow we'll just focus on mass movements and then we'll move on to geomorphology proper. Erosion के सारे all landforms consider करते हैं. जितने भी अलग-अलग dynamic agents हैं ना, उसके landforms consider करेंगे. Okay. So people try not to miss the next lectures because there will be little chance for us to revise that all over again. चलेगा? Yes, ma'am. Okay, ठीक है. Now we move on to the rest of the fundamental rights that we were looking into. Okay, we had looked into all fundamental rights related to equality. So 14, 15, 16, 17, and 18. And then we had looked into one fundamental right that was related to freedom. That is right to freedom. Okay, सारे जो 6 freedoms available है हमको, वो सारी freedoms देख लिए हमने. All right. Now ये वाले जो दो है these two, ये पूरा block,
2021 and 22. Okay, these are also concerned with freedom only. Now let's look at this. Article 20 जो होता है, it concerns the freedom of an individual in protection in conviction for offenses. Okay, let's try to understand what conviction, the word conviction means. जब किसी पे इल्जाम लगता है, तो then that is called as an accusation or an allegation. Okay, मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, accusation or allegation. Okay, इल्जाम लगता है किसी पे कि this person has been accused of certain crime, accused of a certain crime. Okay, so then the case goes to then the whole matter goes to a court of law, and if in the court of law the crime has been proved against that person, then that person is convicted of that crime. Okay, समझा आपको फर्क? हाँ, जब तक that person is not unless that crime is proven upon that, unless that crime is not proven upon that person is considered innocent. Okay, in law. Once the crime is proven upon that person, then he is convicted of a crime, and then उनको जो भी necessary appropriate sentencing होगा उनका वो हो जाएगा. Okay, sentencing मतलब उनको जो सजा सुनाई जाती है ना, that is called as sentencing. आपको ये अलग-अलग words का मतलब समझा क्या? Did you understand the meaning of all these different words? Okay, now what happens is ना, हाँ जी मैम वो कन्विक्ट उसका वापस बताओ ना. कन्विक्शन क्या होता है? हाँ मैम. जब किसी सपोज किसी को चोरी का इल्जाम लग गया किसी इंसान पे. ओके, एंड उस बंदे को पुलिस ने पकड़ के रखा जेल में. ओके, फिर उसके बाद उनको जाके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है. तो पुलिस ने सिर्फ इल्जाम लगाया है. ओके, द पुलिस हैव सिंपली अक्यूज्ड दैट पर्सन ऑफ अ सर्टेन क्राइम, or whoever, somebody else, maybe some other person has accused that person of a crime कि इन्होंने चोरी वोरी की थी. ओके, उसके बाद when the case goes to court, जब वो पूरा मैटर कोर्ट में चला जाता है in a proper court of law, तो फिर वो जज डिसाइड करते हैं, वो सबूत देखते हैं, and you know he sees कि क्या, you know, what is right, what is wrong, is this person really you know responsible for the crime, and so on and so forth. अगर that crime अगर प्रूव हो गया कि इसी बंदे ने ये क्राइम किया है, तो then that person is convicted of the crime. ओके, कन्विक्शन मतलब उनके ऊपर इल्जाम प्रूव हो गया है एंड अभी उनको सजा मिलेगी. तो वो जो सजा होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज सेंटेंसिंग. तो ये डिफरेंट स्टेजेस होते हैं इन दिस प्रोसेस. पहले एलिगेशन या अक्यूजेशन लगता है, फिर उसके बाद कन्विक्शन होता है. कभी कभी उनको कन्विक्शन नहीं होता है, ही इज प्रूवन इनोसेंट एंड उनको छोड़ दिया जाता है. लेकिन अगर कन्विक्शन हो गया, मतलब उस इंसान ने क्राइम किया है, ये प्रूव हो गया, तो फिर उसके बाद उनका सेंटेंसिंग हो जाता है. ओके, ठीक है. तो ये दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लॉ. ये इस तरह से लॉ चलता है. ओके, अभी जब हम किसी को इंडियन लॉ में, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, इफ you know the government, or rather the law मतलब पुलिस है ना, if they have to accuse or convict somebody of any crime, the law in India, if that law has to convict somebody of any offenses or any crimes, तो फिर क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है सिटीजन्स को, ये इसका लिस्ट है. ओके, आर्टिकल 20. So one, first of all, no person in India can ever be accused of a crime for something that they have done in the past. Okay, and for a law that has been formed recently. I'll tell. Retrospective application जिसको कहते हैं ना, ex post facto legislation कहते हैं उसको. यार, this is ना very weird. मैं ये भी यहाँ पर लिख के बता रही हूँ आपको. Okay, I'll just write it over here. Ex post है ना बाबा? I'm not saying this wrongly. Okay, ex post facto. Okay, that is legislation. Ex post facto legislation का मतलब होता है this relates to retrospective application. हाँ, this ये जो होता है ना, that will relate to retrospective application. अरे no, I need to draw. Okay, that will lead to this. ऐसे ये जो होता है, that is related to retrospective application. Retrospective application मतलब, say for example, we banned TikTok or something, right? हमने उसको बैन कर दिया है, उस एप्लीकेशन को इंडिया से. Is that right? Am I? Because I have never used that application, so I don't know really. But let's say for the purpose of this particular explanation, let's say we have banned that application, okay, completely. And the government says कि government ने declare किया
कि से सपोज आज 23rd फेब है ना, तो 23rd फेब 2022 के बाद nobody in India should use that application. Okay, ये application किसी ने इस डेट के बाद यूज नहीं करना चाहिए. Now if some person was using this application on 22nd Feb or last month or last year, that person cannot be convicted of this crime. समझा आपको? This is called as retrospective application. Government जो भी law बनाएगा, जो भी legislation बनाएगा कि यार आज के बाद ये crime है या वो crime है या whatever, वो सारे legislations हमेशा फ्यूचर में अप्लाई करते हैं, पास्ट में नहीं अप्लाई कर सकते. दैट इज व्हाट रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉज मीन्स. ओके, नो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉज मीन्स. ओके, समझा आपको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? People, did you really understand that part? Okay, because you've gone suddenly very quiet. मैम Government, बट मतलब इस वाले लॉ में बस हम फ्यूचर की बात करते हैं. करेक्ट, फ्यूचर में जो प्लान्स, तो आगे जाके टिकटॉक को नहीं प्ले करना है ना, मतलब नहीं यूज करना है वो ऐप को. अगर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है तो फिर हम उस ऐप को नहीं यूज कर सकते. लेकिन गवर्नमेंट ने आज वो लॉ लाया है ना, तो वो ये नहीं बोल सकते कि कल या परसों या लास्ट मंथ या कल मतलब यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे और लास्ट मंथ और लास्ट ईयर अगर आप ये ऐप यूज कर रहे थे तो देन आपको अक्यूज नहीं, आपको गवर्नमेंट कन्विक्ट नहीं कर सकता ऑफ यूजिंग दैट ऐप. समझा? सो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चलेगा एप्लीकेशन ऑफ लॉज. आप लॉज को आगे की तरफ अप्लाई कर सकते हैं, फ्यूचर में अप्लाई कर सकते हैं. आप ये नहीं कह सकते कि ये लॉ अभी 2 साल पहले से अप्लाई हो गया है एंड वॉट एवर whoever people have been accused of breaking this law will be convicted of that crime. ऐसा नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकता है, बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग. जब आपको पास्ट में थोड़ी ना पता था कि वो लॉ नहीं, वो गलत लॉ है करके. ये तो लॉ गवर्नमेंट ने आज लाया ना, तो तब जब आप कर रहे थे तो यू वर नॉट कमिटिंग एनी क्राइम, सो इट शुड नॉट बी अ क्राइम इवन लेटर. समझा? आज के बाद अगर आपने ऐसा किया, जब गवर्नमेंट ने लॉ ऐसे इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद अगर किसी इंसान ने ये काम किया तो फिर देन दैट पर्सन कैन बी अक्यूज्ड ऑफ दैट क्राइम. बट बिफोर द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड दैट दिस इज अ क्राइम, हाउ वुड यू नो दैट दिस इज अ क्राइम? सो यू कैन ऑब्वियसली डू एनीथिंग फॉर दैट मैटर. मतलब आप टिकटॉक यूज कर रहे तो आप टिकटॉक यूज कर रहे, इट्स दैट. समझा? यस नो? मैम. अच्छा, ओके ओके, क्लियर, ऑलराइट. पनिशमेंट जो भी होगी दैट विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. ओके, ऐसा नहीं कि जिस जज की जो मर्जी करे वो वैसी पनिशमेंट सुना सकते हैं. यूजुअली यू नो एवरी सिंगल टाइम दैट क्राइम इज, यू नो, एक क्राइम को डिफाइन किया जाता है अपने प्रोसीजर में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, तो उसमें क्लियरली लिखा होता है कि यू कैन, यू नो, दिस पर्टिकुलर क्राइम कैरीज अ पनिशमेंट ऑफ सो एंड सो मेनी इयर्स एंड सो मच मॉनेटरी फाइन. इतना सब ऐसे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब्ड होता है लॉ में. ओके, सो द पनिशमेंट इज एज पर डिस्क्राइब्ड बाय लॉ. There will only be one time prosecution and punishment for the same offense. This is an interesting thing. US law में there is something called as double jeopardy. Okay, इस वर्ड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन लॉ में हमने कहीं भी यूज नहीं किया है. ये भी पूछा जाता है हमको. ओके, इट्स अ प्रॉपर, ये लीगल टर्म है, इसको कहते हैं डबल जेपर्डी. डबल जेपर्डी का मतलब लीगल टर्म्स में उसका मतलब ये होता है कि a person cannot be accused, even under US law, a person cannot be accused of the same crime twice. If a person has already undergone punishment, अगर उन्होंने already punishment भुगती है किसी एक offense के लिए, तो उनको उसी offense के लिए दोबारा से punish नहीं किया जा सकता. Okay, you can't punish a person twice for the same crime. That is what the whole concept of double jeopardy means. हमने भी उसी को double jeopardy ना बोलते हुए अपने लॉ में इंप्लीमेंट किया है. ओके, इवन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट अ पर्सन कैन बी, फॉर वन सिंगल क्राइम अ पर्सन कैन ओनली बी पनिश्ड वंस. ओके, सो ये होता है, दैट्स द थिंग. ऑलराइट, एंड खुद के अगेंस्ट कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं दे सकते. नो कंपल्शन फॉर विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ. ओके, फॉर एग्जाम्पल, a person commits a crime. Okay, किसी ने कोई टैक्स फ्रॉड किया है. Let's assume कि पर्सन ए है और that person has committed a tax fraud. Okay, उनको गवर्नमेंट अरेस्ट करता है एंड पूछता है, मिस्टर ए, प्लीज टेल इफ यू हैव कमिटेड दिस क्राइम. मिस्टर ए इज वेरी legally right in saying I have not committed this crime. But rather, Mr. A, if Mr. A can't say he has not committed this crime, Mr. A will simply say that I don't have anything to say.
Okay, Mr. A should ideally say, I have nothing to say. Because अगर वो ये भी बोलते हैं कोर्ट में जाके कि मैंने ये क्राइम कमिट नहीं किया है और उन पे वो क्राइम साबित हो गया, तो फिर वो बेचारे पर्जरी में भी पकड़े जाएंगे, झूठ बोल रहे थे कोर्ट में इसलिए, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है. बट यू कांट फोर्स अ पर्सन टू गिव विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स. वो खुद ही के क्राइम्स को ऐसे कन्फेस करने के लिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. तो पुलिस जो लोगों को मार मार के कन्फेशन देती है ना, वो गलत है. वो प्रॉपर तरीका नहीं है. समझा आपको? इज दिस ओके? यू कांट कंपेल समबडी टू गिव विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स. ओके, चलेगा? तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है इन प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन ऑफेंसेस. ओके, ये सब कुछ नहीं अप्लाई कर सकते हम. आई मीन these are the these are a few lines that Indian law cannot cross when it comes to convicting people. All right, समझे ना आपको सारे पॉइंट्स? Now you come to Article 21. Okay, Article 21 is proper protection of life and personal liberty. एक देख रहा था कि आपको क्या क्या किस किस चीज में कन्विक्ट कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते. ओके, नाउ दिस सेकंड आर्टिकल, Article 21, clearly tells you कि how is your life and liberty going to be protected by the government. Okay, तो द लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी जो होता है, इट इज गारंटीड बाय द स्टेट एंड इट विल ओनली बी डिप्राइव्ड बाय एज पर प्रोसीजर ऑफ लॉ. ओके, जो भी लॉ ने प्रोसेस बताया है, सिर्फ उसी के हिसाब से अ पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. पर्सनल लिबर्टी माने क्या? आप कहीं भी आ जा सकते हैं, राइट? अ पर्सन कैन गो एनीवेयर. How can the government deprive a person of their personal liberty? By putting that person in jail, by incarcerating that person. किसी को जेल में डाल दिया तो उनका पर्सनल लिबर्टी चला गया, किसी को हाउस अरेस्ट में डाल दिया तो भी उनका पर्सनल लिबर्टी चला गया. ओके, समझा? क्लियर इनफ? हाउ डज द गवर्नमेंट डिप्राइव समवन ऑफ देयर लाइफ? जिंदगी से कैसे डिप्राइव कर सकते हैं आप लोगों को? बाय सेंटेंसिंग दैट पर्सन टू डेथ, है ना? सो these are the things that we are talking about: incarceration or house arrest and death sentence. Okay, this is what the government is, this is what we are talking about in a broader sense of the term. So life and liberty jo hota hai, personal liberty in Indian law, that is guaranteed by the state. Okay, ki everybody ka every person ka life and personal liberty is guaranteed, and it will only be deprived, the person will only be deprived of their life and liberty as per procedure of law. Okay, so if a person commits a crime and if that crime is proved upon that person कि he is convicted of a crime, then उसका जो भी sentencing होगा वो हो जाएगा, and that person will be either jailed or sentenced to death or whatever, depending on the nature of the crime. Okay, so this is deprivation. This is deprivation of life and personal liberty. लेकिन वो जो भी process होगा, that will be done as per procedure of law. जैसे हमारे यहाँ पे legislation बनाया है, whatever the law in India says, उसी हिसाब से होगा. It will be nothing contrary to whatever the law in the law book say. Okay, समझा? मैंने इसको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहिए क्या? If you feel that most of my explanations are appearing a little in a legal language or something like that, actually, see, if किसी इंसान ने अगर क्राइम कमिट कर लिया, ओके, सी नॉर्मली ना गवर्नमेंट सबका लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है. ओके, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स एवरीबॉडीज लाइफ एंड लिबर्टी. ओके, हर किसी की लाइफ को एंड पर्सनल लिबर्टी को द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट in what case will the government take away from somebody's life and life or personal liberty? किस केस में गवर्नमेंट किसी को डिप्राइव करेगा कि बोलेगा नहीं, यू कैन नॉट हैव योर लाइफ और यू कैन नॉट हैव योर पर्सनल लिबर्टी एनी मोर? ऐसे गवर्नमेंट किसी इंसान को कब बोलेगा? जब वो इंसान ने कोई बुरा गलत काम किया है, कोई क्राइम कमिट किया है, उस केस में. ओके, अदरवाइज गवर्नमेंट किसी को ऐसे ही जेल में नहीं डाल सकता, गवर्नमेंट किसी को ऐसे ही मार नहीं सकता, है ना? सो ये सारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट है. बाय द वे, आर्टिकल 2021 जो है ना, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते हैं. नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के, मतलब नॉर्मल जनरल ह्यूमन बींग्स के अगेंस्ट काम नहीं करता है. सो ये जो डेप्रिवेशन है ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट take somebody's life or incarcerate somebody, या किसी को जेल नहीं कर सकते unless the procedure of law is followed. Okay, जो भी legislation है, सब कुछ जो होगा वो बहुत legally और lawfully होगा, ऐसे हमने promise किया है. Okay, समझा? तो अगर कोई पर्सन क्राइम कमिट करता है तो ही उनको जेल में डाल सकते हैं, या फिर हाउस अरेस्ट में डाल सकते हैं, या फिर उनको like if that crime is serious enough, तो फिर उस बंदे को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, and then that is deprivation of life. Okay, and that happens by the order of the state, मतलब order of the government. So clearly that is all okay.
समझा? तो that is protection of life and liberty. You people have gone really silent in the chatter, and you guys are not responding also. So I'm assuming that you've understood whatever I'm saying. नहीं समझा होगा तो पूछ लीजिएगा. नहीं मैम Okay. समझ रहा है. All right, thank you, thank you. अभी उसी का एक सब क्लॉज हमने बनाया है आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, बिकॉज वी consider grouping this in liberty only. Education जो है, that is also a freedom available. It's a freedom. It's not a privilege. People, let's remember this. Right to education is not a privilege. It's an absolute fundamental human right. उतना ही जितना we consider, right, human rights क्या होते हैं? Those rights which will allow a person to live their life with dignity and self-respect, है ना? Those are proper human rights. So right to education is also considered one of those. It is very, very fundamental to the existence of human beings that each and every one of them have that access to education. हर किसी को वो education का, जितना drinking water का access important होता है ना, या food का access important होता है, उतना ही education का भी access important है आजकल के जमाने में. Okay, because you need to open your eyes to the world. All right. So free and compulsory education to all children between the age of 6 and 14 years. Between the age of 6 and 14 years, मतलब first से लेके 9th standard तक का education compulsory है. Free and compulsory education to all children. Okay. There is even a clause which says कि अगर माँ बाप अपने बच्चों को enroll नहीं कर रहे होंगे education के लिए, तो माँ बाप भी those parents are liable to punishment. Like, clearly punishment deserve करते हैं. Legally, that's a crime to not enroll your children in schools and not ensure कि they are getting their education. वो एक proper crime होता है अपने यहाँ पे. Anyways, ठीक है. Article 21, right to education चलेगा. तो that is included within, मतलब वो 20 का 21 का सब क्लॉज बन के आर्टिकल 21 ही घूमता है वहां पे. सब क्लॉज नहीं है, लेकिन इट इज क्लोज टू दैट, उसके साथ ही जोड़ दिया जाता है उसको. Okay, and then there is Article 22, which talks of protection in case of preventive detention. इसको फंडामेंटल राइट बनाना थोड़ा सा फनी है, लेकिन लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन ये स्टेट का प्रिविलेज है. ओके, स्टेट का माने गवर्नमेंट का प्रिविलेज है. इट वर्क्स लाइक दिस कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई इंसान इंडिया के सिक्योरिटी को या फिर इंटेग्रिटी को या पीस को या सोशल पीस को, सोसाइटी के पीस को एंड वेलबींग को इन जनरल थ्रेटन करता है, या फिर मास कम्युनिकेशन एंड ट्रेड को भी थ्रेटन करता है, तो in that case, that person, the government has a right, the government has this exclusive right to put that person into preventive detention. Detention माने arrest करके रखना. Okay, preventive detention मतलब ये इंसान, गवर्नमेंट ने एंटिसिपेट किया है कि ये कुछ तो गलत हरकतें करने वाला है, ये बंदा या बंदी, जिसकी वजह से आगे जाके इंडिया के लिए नुकसानदेह हो सकता है. ओके, सो ये हरकतें ये बंदा ना करे, इनको वो लिबर्टी या फ्रीडम ना मिले ये सारी गलत हरकतें करने का, इसलिए पहले से इस बंदे को उठा के हाउस अरेस्ट में रख दो या फिर जेल में डाल दो या समथिंग लाइक दैट. ओके, तो ये वाला जो प्रिंसिपल या पॉलिसी गवर्नमेंट अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन. समझा? प्रिवेंटिव मतलब रोक के रखना किसी को, इसके लिए रोक के रखा है या इसके लिए प्रिवेंटिव अरेस्ट करके रखा है, ताकि ये जो गलत हरकतें करने वाले थे, ऐसे गवर्नमेंट को लगता है, वो गलत हरकतें नहीं कर सकते. ओके, नाउ वंस अगेन, ये अभी दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल रूल. ओके, ये नॉर्मली दूसरे देशों में दिस लाइक इन प्रॉपर डेमोक्रेसीज दिस विल बी फ्राउंड अपॉन. प्रिवेंटिव डिटेंशन वुड बी प्रॉपर्ली फ्राउंड अपॉन इन प्रॉपर ओपन डेमोक्रेसीज जो होती है ना, तो उसमें ये लॉ नहीं चलेगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड ऑल. बिकॉज हाउ कैन जो क्राइम किसी इंसान ने किया नहीं, उसके लिए आप उसको काइंड ऑफ अक्यूज करके ऑलरेडी जेल में डाल रहे हैं, डजंट मेक एनी सेंस, राइट? दिस गोज अगेंस्ट द वेरी प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम, है ना, ये इसके अगेंस्ट जाता है. So let's understand why this is involved over here. Okay, गवर्नमेंट कहता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल करवा सकते हैं हम, ताकि गवर्नमेंट इसको गलत तरीके से ना यूज करे. ओके, that the government doesn't use it in wrong and improper ways. तो हम क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं टू आवर सिटीजन्स. ऑलराइट, तो आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. मतलब अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे नहीं करना चाहिए. यूजुअली जब गवर्नमेंट किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करवाता है,
तो then that whole thing goes to the Supreme Court. But एकदम फटाक से everything goes to the Supreme Court, and then the Supreme Court decides कि ये सही है नहीं है whatever, and Supreme Court का भी फैसला हो जाता है, तो clearly यार वो governments को मानना पड़ता है. एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप 3 महीने से ज्यादा किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रख सकते. वॉट एवर योर रीजन, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर इशू विद इन 3 months, एंड यू कैन नॉट होल्ड अ पर्सन फॉर मोर देन 3 months इन प्रिवेंटिव डिटेंशन एट वन गिवन टाइम. ओके, एक टाइम पे सिर्फ 3 महीने के लिए आप किसी इंसान को प्रिवेंटिव डिटेंशन में होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, सो ऐसा वाला प्रोटेक्शन अवेलेबल होता है टू सिटीजंस इन केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन. अभी देयर इज अ, हाँ जी मैम, बट किसके बेसिस पे करते हैं ये, मतलब गवर्नमेंट? कितना स्मार्ट क्वेश्चन पूछा है ना आपने. गवर्नमेंट को नेसेसरली हमेशा ये बताना जरूरी नहीं. आपका नाम क्या है सर? मैम आर्यन. Aryan. Okay, hi Aryan. Thank you for asking this question. I didn't want to go into the topic, but since you asked, so normally ना गवर्नमेंट को क्लियरली स्पेसिफाई भी नहीं करना जरूरी होता है. गवर्नमेंट ने, आई हैव सीन अ केस जिसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली ये बोला है कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, एंड लेकिन हमको परमिशन होनी चाहिए इस बंदे को प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने की, बिकॉज ही इज अ थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड दिस ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी एंड यू नो ऑल सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स. कि ये बंदा क्लियरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, एंड इसके लिए इतना सेंसिटिव मैटर है ये दैट वी कैन नॉट इवन डिस्क्लोज द नेचर ऑफ दिस मैटर टू द कोर्ट. हम then we will be threatening the security of India by simply disclosing the nature, you know, the nature of his crimes. So हम ये बताना चाहते हैं, इसलिए उस बंदे को उठाकर जेल में डाल देते हैं. So once again it becomes and then the Supreme Court also can't really argue, right? अब ये उस जज पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे डील करना चाहते हैं इस मैटर के साथ. सो दिस बिकम्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यार. बहुत सारी लीगल प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होते हैं क्लियरली उसमें. लाइक इट इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स कि लाइक यू नो कोई ऐसे स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स नहीं है कि इतनी हरकतें कर ली किसी ने तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन में वगैरह डाल सकते हैं. प्रिवेंटिव डिटेंशन कैन बी यूज्ड एज अ tool by the government, a proper legal method by the government to intimidate individuals जो government का साथ नहीं देते या government के against बात करते हैं, or you know stuff like that. So governments can use this. इसीलिए preventive detention becomes a huge thorn in the sides of anybody. मतलब जो भी proper democracies होती है, I told you right, it's a very weird thing to have in a democracy. Anyways, that's the way it works. चलेगा. बहुत ज्यादा मतलब कुछ गवर्नमेंट स्पेसिफाई करते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्यों रखा है. कुछ बोल लाइक सम गवर्नमेंट में कम अप विद दिस एक्सप्लेनेशन आल्सो. ठीक है, तो ये रहे सारे फ्रीडम्स, मतलब ये सारे फ्रीडम्स से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स. ओके, अप टिल आर्टिकल 22. नाउ वी मूव ऑन. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन आर्यन? यस मैम. यस. ओके, ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. ओके, कि किसी इंसान का ये 23-24 जो है आर्टिकल्स, दैट विल बी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. किसी भी इंसान का, इंडियन सिटीजन का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा, इसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ओके, सो देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर. किसी इंसान को फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते आप. यू कांट जस्ट फोर्स अ पर्सन टू एक्सेप्ट अ सर्टेन wages, certain payments and say कि इतने पैसे में इतना सारा काम करवाना है, नहीं किया तो देख लो ऐसे. You can't do that. Okay, human trafficking not allowed. You can't trade in human beings. लोगों को बेच नहीं सकते आप किसी भी reason के लिए. Okay, you can't sell human beings. That's a proper crime in India. Prohibition of human trafficking, forced labor. These are huge crimes punishable by law. Okay. बेगार इज ऑल्सो फोर्स लेबर. वो पुराने जमाने में ना किंग्स या मिलिट्री वगैरह ऐसे सारे पीपल इन पावर है ना, they used to force other common citizens to work for them, and they used to not pay them very well, obviously, because otherwise फिर पावर कैसे पता चलेगी आपको. तो that used to be called as बेगार. तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स्ड लेबर, ये प्रॉपरली मेंशन किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑल दिस इज बैंड. Okay, in India this is a proper crime. And article 24 says prohibition of employment of children in hazardous workplaces. चिल्ड्रन को कहाँ एम्प्लॉय नहीं कर सकते? जहाँ पे hazardous workplaces होते हैं वहाँ पे चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते. Ideally employment of children in becomes already a tricky issue. अब ये आर्टिकल becomes very important in places like
this is a very old issue, मतलब बहुत पुराना issue है, लेकिन इसके जो factories होते हैं ना, ammunition वो जो दिवाली के पटाखे वगैरह बनाते हैं ना, फायर क्रैकर्स वगैरह बनाते हैं, राइट? सो वो फायर क्रैकर्स वगैरह के जो फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके लिए ना यू नीड टू रोल दोज फायर क्रैकर्स समटाइम्स. व्हाट यू नीड इज स्किलफुल हैंड्स, स्मॉलर हैंड्स, स्किलफुल हैंड्स. तो वुमेन एंड चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करने का ये ज्यादा है वहाँ पे. ऊपर से वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑल्सो नीड टू बी पेड लेस, है ना? आप उनको ज्यादा देर के लिए काम करवा सकते हैं, कम पेमेंट में काम करवा सकते हैं. तो दोज यूज्ड टू बी प्रॉपर स्वेट शॉप्स. ऐसे वाले इंडस्ट्रीज जो होते थे ना, वो प्रॉपर ऐसे स्वेट शॉप्स करके काम करते थे. एंड वहां पर यूजुअली बहुत इलीगल एम्प्लॉयमेंट होता था चिल्ड्रन का. सो वी ब्रॉट डाउन प्रॉपर लॉज रिलेटेड टू दोस कि चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते इन हैजार्डस वर्क प्लेसेस. देयर हैव बीन मल्टीपल टाइम्स जब हमने हमारे इंडस्ट्रियल लॉज को ये किया था, अमेंड किया था, सो दैट वी कुड कीप चिल्ड्रन आउट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल्सो. हमारे यहाँ पे बहुत आसानी से कंस्ट्रक्शन, हैजार्डस वर्क प्लेसेस जहाँ पर बच्चों की वेलबींग को खतरा हो सकता है, लाइफ एंड वेलबींग को खतरा हो सकता है. मीनिंग इट कैन बी अ कंस्ट्रक्शन साइट. कंस्ट्रक्शन साइट इज नो प्लेस फॉर लिटिल किड्स, दैट इज नो प्लेस फॉर लिटिल किड्स. और दीज फैक्ट्रीज जहाँ पे एमिनेशन के साथ डील कर सकते हैं यार, लिटिल किड्स वंस अगेन इनफ मैच्योरिटी नहीं है उस एमिनेशन के साथ डील करने की, है ना? और देन hazardous like chemical factories or something like that, ऐसी वाली जगह पर आपने बच्चों को नहीं एम्प्लॉय करना चाहिए. कम टू थिंक ऑफ इट, हाउ सेफ आर होटल्स जहाँ पर इजीली बच्चे, वो नहीं, वो छोटू नाम का एक बच्चा होता है जो हमेशा चाय लाता है आपके लिए, तो होटल्स में. तो हाउ सेफ इज इट टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इवन इन होटल्स, रेस्टोरेंट्स में भी? क्योंकि वहां पे भी गैस सिलेंडर्स होते हैं, किचन्स होते हैं. Those are places that are very vulnerable to accidents. Is that an okay place for children to be employed in? So anyways, this becomes a matter of proper legislation. Then अभी government को वो भी legislation लाना पड़ेगा कि बच्चों को ऐसे जगह पे employ नहीं करना चाहिए. I remember there was a law somewhere in Maharashtra also for some certain this of time कि आपको घर में जो domestic help होता है ना, that help also has to be above 18 years of age or something. किसी government ने ये law लाया था. I remember at one point of time महाराष्ट्र में भी ये law consider कर रहे थे. I don't know if it is a proper law now or not, but clearly they were considering this law. People were considering this law. Yes. तो फिर हमारे घर वाले तो बहुत काम करवाते हैं. नहीं, you are not getting paid for it, right? That is employment. आपको जो घर में कामें मिलते हैं करने के लिए, those are just normal chores जो आपने करने चाहिए, because that is part of growing up and you're helping out your mom and dad and they are raising you, right? तो it is not उसके लिए आपको पेमेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर वाला पेमेंट नहीं मिलता है, राइट? बट ऑन दी अदर हैंड ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है इसमें प्रॉपर like the kid does some work and then he or she is paid for it clearly. तो वो नहीं करवाना चाहिए. Sir, you people are funny. Anyways, ठीक है क्या? So this is that part. Then next ये जो बाकी के हैं ये proper religious freedoms है. अभी आपने 25 से लेके 28 तक जितने भी freedoms है, those are proper religious freedoms. You can have freedom of conscience, मतलब कौन से conscience free profession, practice and propagation of a religion. Okay, conscience माने to realize, to accept a particular religion. Okay, to profess a religion is to go around telling everyone I belong to this religion and I freely practice करना उस religion को, जो भी religion होगा, and उसको propagate करना. मैं आपको भी आके बोल सकती हूँ, hello people, listen, I'm following this religion and it's a great religion. मेरे religion में ऐसे ऐसे सब करते हैं and this is I like my religion. Do you want to attend a meeting of my religion? है ना? ये यहाँ तक बोलना is perfectly okay. Okay, do you want to attend a meeting? But if I start paying you to convert to my religion, or start threatening you or making you uncomfortable in any manner, or like causing threat to your well-being while propagating my religion, then that is a problem. Okay, जब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि see how well my religion is doing and you should come over and see what my religion is and all that sort of thing, that is okay. Okay, I can go to your house and tell you, see, I like my religion, you can also come and try it out and stuff like that. Okay, but I can't threaten somebody to follow my religion. I can't pay somebody. मैं किसी को पैसे में भी या फिर jobs देके या किसी तरीके से bribe नहीं कर सकती into accepting my religion. That is wrong. That would be illegal. Okay, try to understand this.
तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड प्री प्रोफेशन अलाउड है, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन अलाउड है आपकी रिलीजन का. ओके, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स वो भी पूरी तरह से अलाउड है. मैं चाहे तो मेरे रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए स्कूल्स खोल लूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप कंस्ट्रक्ट कर लूँ. सो वो रिलीजियस अफेयर्स मैनेज, आई ओपन अप अ नाइस prayer meeting or something like that. All this is allowed. Okay, ये सब कुछ चल सकता है. Freedom as to payment of taxes for promotion of a particular religion, of course, that is also allowed. Okay, you can't be forced to pay taxes for the propagation of a certain religion. But if मैं अपनी मर्जी से अगर किसी religion को contribute करना चाहती हूँ, तो then that is okay. Okay, but if government किसी एक religion को promote करने के लिए आपसे taxes नहीं ले सकता है. All right, ठीक है, that is also as कूल एंड मतलब वो भी उतना ही ट्रू स्टैंड करता है, ये वाला एस्पेक्ट. एंड लास्टली आर्टिकल 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट कुछ यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स वगैरह जो होते हैं ना, उनके साथ एफिलिएटेड उनका रिलीजियस वर्क इंस्ट्रक्शंस या मतलब दे आल्सो गो फॉर अ रिलीजियस कोर्स. मैंने आपको बताया था ना, एक सेक्युलर स्टडीज होता है और दूसरा रिलीजियस स्टडीज होता है. तो कुछ स्कूल्स में प्रॉपर्ली रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या फिर यूनिवर्सिटीज में भी फॉर दैट मैटर, एंड प्रॉपर रिलीजियस वर्शिप के तरीके वगैरह सिखाते हैं. सो वी हैव दैट इन एवरी रिलीजन, राइट? देयर आर प्रॉपर स्कूल्स दैट एजुकेट पीपल इन द रिलीजियस स्टडीज. हर रिलीजन का होता है. You have that for Christianity, for Islam, for Hinduism, Judaism, हर किसी, and those are proper schools people, जहाँ पर लोगों को properly सारे religious books के ऊपर instruction मिलता है, उसका proper understanding होता है, and so on so forth. Okay, and people go into those studies. तो हर किसी को ये freedom है ये attend करने का in that particular educational institution. Okay, everybody has the right to do so, अगर वो चाहे करना तो. एंड लास्टली जो 2 आर्टिकल्स है, दैट इज सोशो कल्चरल राइट्स. ओके, आपके जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है ना, वो वाले राइट्स के साथ डील कर रहे हैं आप. आर्टिकल 29 एंड 30, इट सेज कि प्रोटेक्शन, आर्टिकल 29 सेज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज. ओके, माइनॉरिटी कल्चर्स या फिर उनका स्क्रिप्ट, उनका कोई डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज होगा तो फिर उसको प्रोटेक्ट करना है. अब माइनॉरिटी डजंट मीन जस्ट बाय रिलीजन, माइनॉरिटी मीन्स सिंपली अ स्मॉल ग्रुप. ओके, सो छोटा सा ग्रुप, इट डजंट मीन कि कोई रिलीजन के हिसाब से माइनॉरिटी और समथिंग. इट सिंपली मीन्स अ स्मॉल ग्रुप विच इज वेरी डिस्टिंक्टिव, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसको प्रिजर्व करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए. तो फिर ऐसे लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर का प्रिजर्वेशन करना, कंजर्वेशन करना. ओके, दिस इज क्लियरली अलाउड. ओके, गवर्नमेंट भी करवा सकता है. द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो have some contribution towards this cause. And right, lastly, private individuals can also do that, of course, without a doubt, but the government can also support such a cause. It wouldn't be wrong if the government supports such a cause. And Article 30 says that right of the minorities to establish and administer the educational institutions. Okay, अभी जो minority institutions होती है, वो अपना educational institution या establish भी कर सकते हैं and administer भी कर सकते हैं. Okay, so उसका अगर गवर्नमेंट को वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करना होगा, ऐसे वाले इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट को एक्वायर करना होगा, तो गवर्नमेंट को मार्केट रेट से एक्वायर करना पड़ता है. वो उसका प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है. द गवर्नमेंट कांट से नहीं, दिस इज अ गवर्नमेंट एक्विजिशन, इसलिए आप आधे रेट पे गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा एंड ऑल. दैट बिकम्स अ स्कैरी एस्पेक्ट. फिर वो प्रॉपर कोर्ट में चला जाता है, एंड इवन द सुप्रीम कोर्ट क्लियरली साइट्स दिस रूल and informs the government that guys, you got to pay the market rate. जो भी उस प्रॉपर्टी का मार्केट रेट होगा उससे पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को. नॉर्मली जब गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल से कुछ खरीदता है ना, रास्ता, खेत वगैरह, इसीलिए तो वो इतने प्रॉब्लम्स होते हैं ना लोगों के, जब उनकी जमीनें गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट रादर बाय कर लेता है, लेकिन उनको उसका मार्केट रेट नहीं मिलता है. यू अंडरस्टैंड मार्केट रेट, राइट? जो भी बाजार में रेट चल रहा होगा उस जमीन का, वो रेट नहीं मिलता है उनको, कम दाम में गवर्नमेंट को बेचना पड़ता है, बिकॉज दैट इज फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी. या मैम, जैसे कि विलेजेस में वो विंड मिल्स के लिए मतलब ज्यादातर होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो एब्सोल्युटली करेक्ट. विंड मिल्स के लिए जगह एक्वायर करता है गवर्नमेंट, कभी वो डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए गवर्नमेंट एक्वायर करता है, या फिर वो न्यूक्लियर फैक्ट्री के लिए एक्वायर किया था, या फिर रिमेंबर द होल सिंगूर प्लांट का इशू. फार्मर्स का लैंड एक्वायर कर रहे थे बिकॉज टाटाज वांटेड टू पुट अप plant, car manufacturing plant in West Bengal, and that is where Mamta Banerjee comes from.
So I mean that is the place where the whole thing happened. तो वो ऐसे वाली जगह पर गवर्नमेंट को जब कोई लैंड का बहुत बड़ी लैंड का रिक्वायरमेंट होता है तो गवर्नमेंट मार्केट रेट पे करता है. गवर्नमेंट डजंट कैनॉट अफोर्ड टू पे यू द मार्केट रेट. वो हमेशा कम रेट से एक्वायर करते हैं लैंड. तो ये वाली केस में जहां पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, गवर्नमेंट हैज टू गो फॉर मार्केट रेट, प्रॉपर कॉम्पेंसेशन देना पड़ता है. ठीक है, फाइन पीपल. Okay, then I guess we are done with rights. हमारे सारे fundamental rights हो गए. अभी कल ना आर्टिकल 32 करेंगे, उससे related सारे writs कर लेंगे, and then we'll go just move on to the basic landmark judgments and everything. जो भी important judgments है ना वो देख लेंगे. ठीक है, that should finish off fundamental rights. Okay, चलो, I have taken 2 minutes extra. Thank you very much for your time and patience, and sorry if this was boring, but I wanted to explain to you how these rights work. Okay, so take care. Thank you. Stay safe. Bye bye.